नमस्कार बच्चों, आज हम आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सेतु बंध के कार्य के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए, आप अपनी किताब पुट संख्या 1, 2, 3, 4 के पुटवाओं को खोलो और जानो। तो आइए, पहला पुट संख्या देखिए। सदैव का अर्थ है कि जो एक वचन में भी और बहुवचन में भी ना बदलाव हो, उन शब्दों को हम सदैव के नाम से जानते हैं। तो चलिए, मैं आपके सामने 6 प्रश्नों को पढ़ूंगी और आपको उत्तर दिखाऊंगी। तो पहला है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखिए। दूसरा है, पक्षियों के नाम हिंदी में लिखिए, जैसे पारिवाड़ा। दूसरा है गुब्बच्ची। तीसरा है हद्दू। चौथा है कोली और 5वां है कागे। संज्ञा के भेद बताइए। और 4वां है, सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। जो आपके प्रश्न में सर्वनाम है उसे आप रेखांकित मीन्स अंडरलाइन करना होता है। और 5वां है, दूध से बनने वाले 5 खाद्य के पदार्थों का नाम लिखिए। और अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए, जैसे हार, हार, पर, जान, जान, जो इस तरह से है। और अब हम आपको उत्तर दिखाएंगे। तो देख लीजिए, जो सदैव के एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखे इस तरह से हैं। जनता, दूध, वर्षा, आग, आकाश। जनता मीन्स ಜನಗಳು, दूध मीन्स ಹಾಲು, वर्षा मीन्स ಮಳೆ, आग मीन्स बेंकी, आकाश मीन्स स्काई, आकाश होता है। और दूसरे का उत्तर इस तरह से है, दूसरे प्रश्न का जो कन्नड़ में है। पारिवाड़ा को हम कबूतर कहते हैं, गुब्बच्ची को चिड़िया बुलाते हैं, हद्दू उसका अर्थ है चील, कोली मीन्स मुर्गी, कागे का अर्थ होता है कौवा। और संज्ञा के भेद बताइए प्रश्न है आपका। तो उत्तर देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है। और 4वां प्रश्न है, सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। जो सर्वनाम इस शब्दों में दिए हैं आप उसे पहचान कर लिखिए, जो इस तरह से है। वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। वे, इसमें है रेखांकित करना पड़ेगा आपको वे शब्द। और दूसरा को प्रश्न है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें है रेखांकित कीजिए मैं। और तीसरा है, उन्होंने कार खरीदी, आप रेखांकित कीजिए उन्होंने। और 4वां है, तुम क्यों रो रही हो, इसमें है तुम, रेखांकित कीजिए इस शब्द को। और जो 5वां है, जो और सो। तो 5वां प्रश्न है, दूध से बनने वाले 5 खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುವಂತಹ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ದಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಸರು, ಛಾಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮಕ್ಕನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ, ಘೀ ಮೀನ್ಸ್ ತುಪ್ಪ, ಪನ್ನೀರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ। जो है आपको एक शब्द को 2-2 शब्द दिए गए हैं और अर्थ अलग आएगा। जैसे हार, हार मीन्स सोलू, तो आपको इसमें वाक्यों में प्रयोग करना पड़ेगा आपको, जो इस तरह से है। रावण हार गया, रावणनो सोतनु। तो दूसरा है हार। तो देखिए, भगवान के फोटो पर आर है,
तो ದೇವರ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಮಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. दूसरा है पर ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು पर ರೆಕ್ಕೆ. सो पहला देखते हैं पर उसे पता है ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. और दूसरा है पर यानी पंछी के दो पर हैं ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇವೆ. और तीसरा प्रश्न है ಜಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. तो देखिए जान का पहला अर्थ है मैं उसे जान गया हूँ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ और उसका अर्थ है उसके जान चला गया, उसके जान चला गया, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು. और है आपका 7वां प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए. और 8वां प्रश्न है समानार्थक शब्द लिखिए. और 9वां है दिन और महीनों का नाम हिंदी में लिखिए. तो देख लीजिए इस तरह से है प्रश्न. अब उत्तर पर आ जाइए. तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर इस तरह से है करना, कराना, करवाना. जो करना है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप होता है और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया. करना, कराना, करवाना इस तरह से होता है. और दूसरा है उठना, उठाना, उठवाना. चलना, चलाना, चलवाना. बनना, बनाना, बनवाना. लिखना, लिखाना, लिखवाना. और आ जाइए आप 8वें प्रश्न के उत्तर पर जो समानार्थक शब्द लिखिए. तो जानिए तो और देखिए. समानार्थक पद फर्स्ट है आपको अग्नि. अग्नि मीन्स फायर, तो कन्नड़ में होता है बेंकी. तो देख लीजिए आग, अनल, पालक ऐसा होता है. दूसरा है उत्तर, तो आप उसका जवाब में दीजिए. उसका है उत्तर आपको जवाब. और तीसरा है कनक. कनक मीन्स स्वर्ण, कंचन, हेम मीन्स गोल्ड, बंगारा हम बोलते हैं कन्नड़ में. और चौथा है कग. कग मीन्स पक्षी, चिड़िया, विहाग. और 5वां है गुरु. गुरु को क्या कहते हैं हम? अध्यापक, शिक्षक जो बोलते हैं. और तारा को बोलते हैं नक्षत्र, सितारा. और आ जाइए आप 9वें प्रश्न पर दिन और महीनों का नाम हिंदी में लिखिए. तो देखिए दिन होते हैं आपके वीकली डेज के नाम जाना पड़ेगा आपको, जो आप अंग्रेज़ी में कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऐसा बोलते हैं आप अंग्रेज़ी में. तो अब हिंदी में जानिए इस तरह से होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिचर, इतवार ऐसे बोलते हैं. और महीने के नाम इस तरह से हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो ऐसे होते हैं. और आप आ जाइए आपके 9वें प्रश्न पर मुहावरों का अर्थ लिखिए. जो इस तरह से है आग बबूला होना, 9-2-11 होना, राय का पहाड़ बनाना, आम का आम, घुटली का दाम, आंखें दिखाना. तो देखिए मुहारे मीन्स ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದು. सो देखिए आग बबूला होना का अर्थ है गुस्सा होना यानी सिट्टागुವುದು. और दूसरा है 9-2-11 होना भाग जाना, ओडी ಹೋಗುವುದು. राय का पहाड़ बनाना, छोटी चीज़ को बड़ा बना ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. और चौथा है आम का आम, घुटली के दाम ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 7 ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ
ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ ಹೊಡೆಯುವುದು. और पांचवा है आँखें दिखाना मीन्स डराना, भयपಡಿಸುವುದು. इस तरह से है. और आप 10वां देख लीजिए. जैसे आपको है 11वां तो प्रश्न हो गया आपको, और अब आप 12वां पे आ जाइए. स्पष्टीकरण बताते हुए अपने अध्यापक के नाम एक चिट्ठी पत्र लिखिए. जो आप एक चिट्ठी पत्र मीन्स लेटर राइटिंग, जो आप आपके अध्यापक को विनती करते हुए एक पत्र लिखना पड़ेगा. जो आप आएंगे तो स्कूल को और पाठशाला को हम आपको बताएंगे किस तरह से लिखना है. तो आइए आप 13वां प्रश्न पर हिंदी में अनुवाद कीजिए. तो देखिए, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಳು. ರೀನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಳು. ಮಕ್ಕಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. तो देखिए आपका उत्तर इस तरह से है. देखिए मैंने आपको जानकारी तो पहले दे चुकी थी. जो मुहावरा के अर्थ हैं, बहुत क्रोधित होना, भाग जाना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना, एक काम से दोहरा लाभ और एक दूसरे को देखना. और आपको तो 12 प्रश्न का किताब आपको पुट संकेत दे चुके हैं. 150 पुट संकेत देखिए. और 12वां प्रश्न है जो अनुवाद कीजिए था आपको हिंदी में. तो देखिए, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. मैं बाजार जाता या जाती हूँ. और दूसरा है ಅವಳು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಳು. वे गाना गाती है. और तीसरा है रीना शालेಗೆ ಹೋದಳು. रीना पाठशाला गई. और 4वां प्रश्न है ಮಕ್ಕಳು मैदानದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. और 5वां है ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು गौरविसबेकु. पिता माता को हम गौरव देना चाहिए. तो इस तरह से हैं आपके. और देखिए आपका 14वां प्रश्न है संवाद को पूरा कीजिए. जो देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ. वीणा डॉक्टर बनना चाहती है और मीनू अध्यापिका बनना चाहती है. दोनों के बीच ये संवाद होता है. संवाद मीन्स मातुकते. तो पहले बोलती है मीनू, हाय वीणा, कैसी हो? वीणा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ. हाय वीणा, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ವೀಣಾ ಅಂತಾಳೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. मीनू, सुना है दिन रात किताबों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो. ನೋಡ್ರಿ, ಮೀನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ವೀಣಾಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನು ರಾತ್ರಿ ದಿನವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ವೀಣಾ. कहाँ पढ़ रही हूँ? पिताजी कहते हैं मेरा पढ़ना काफ़ी नहीं है, ऐसे में मैं कुछ नहीं बन पाऊँगी. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ? ವೀಣಾ ಅಂತಾಳೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಮ್ಮ? ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಓದರೆ ಸಾಲು ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. मीनू, पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं? वीणा, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है. तुम क्या बनना चाहती हो? ನೋಡ್ರಿ, ವೀಣಾ ಅಂತಾಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೀನೇನಾಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಮೀನು ವೀಣಾ, ಮೀನು ವೀಣಾ, ನಿಮಗಿಷ್ಟೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ.
ಉಳಿದ ಮಾತುಕತೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಮೀನಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನಾಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಮೀನುದ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. देखिए और ನೋಡಿ ಬಿಡಿ. मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ. ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವೀಣಾ ಬೋಲ್ತಿ ಹೈ, ಅಚ್ಚಾ ಠೀಕ್ ಹೈ ತುಮ್ ಕहाँ जा रही हो. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಹೌದು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ವೀಣಾ ಮೈ ಬಿ ಮೈಸೂರು जा रही हूँ. ನಾನು ಸಹ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೀನುಗೆ ವೀಣಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 15ನೇದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ವಿಹಿತ್ और आकाश दोनों रेल की यात्रा कर रहे हैं. दोनों के परिवारों का परिचय देने वाला संवाद लिखिए. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಮೀನುದು ಮಾತುಕತೆಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಿಹಿತ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಇಬ್ಬರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಕಾಶ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ವಿಹಿತಿಗೆ, ತುಮಾರಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು. ವಿಹಿತ್ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ವಿಹಿತ್ ಹೈ, ತುಮಾರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವಿತ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಆಕಾಶ್ ಹೈ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಮಾರೆ ಘರ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಹೈ. ನೋಡಿರಿ, ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕಾಶ್ ವಿಹಿತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿವಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಾ ಪಿತಾಜಿ ದಾದಿ और मेरा छोटा भाई. और तुम्हारे घर में. ಆಕಾಶಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಹಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಹಿತ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾ ಪಿತಾಜಿ ಬಡೆ ಭಾಯ್ और मैं हूँ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕಾಶ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಹಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಪ್ ಇಸ್ ರೇಲ್ ಗಾಡಿ ಸೆ ಕहाँ जा रहे हो. ಹೌದು, ನೀವು ಈ ರೈಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕಾಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಹಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಮ್ ಭಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾ ರಹೇ ಹೇ, ನಾನು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.